Hey, hello all. This is Sharvat Lokayata, and today I'm coming on a new live with a new topic, which is Israel-Palestine conflict, which is an ongoing issue. So I will be discussing about that. Please share this live, like this, comment on it, subscribe and hit the bell icon in case you haven't done that. सो हम आज का जो टॉपिक है, आज का जो मुद्दा है, वो हमने लिया है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, जो पिछले एक दो हफ्ते से ज्यादा मतलब जोर से चल रहा है। ठीक है, बहुत इंटेंसिटी के साथ। तो ये क्या जो कॉन्फ्लिक्ट है, और इसमें मैंने देख रहा हूँ बहुत सारे लोग पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट करे और इसराइल को सपोर्ट करे। भारत से अंधभक्त बोल रहे हैं फुल सपोर्ट टू इसराइल, आज दो कि इसराइल ही अकेला इसमें विक्टिम है, पैलेस्टाइन विक्टिम है ही नहीं। ये क्या सच्चाई है, हमको ये जानना जरूरी है। हम कंपेयर करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन इशू से, जबकि ऐसा है ही नहीं। पहली बात, बहुत डिफरेंस है हिस्टोरिकली देखा जाए इंडिया पाकिस्तान में। पाकिस्तान जब बना था तो जो मुसलमान ज्वाइन किए थे आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में, वो लोगों ने मुस्लिम लीग का साइड लेकर के हेल्प किया था एक स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्रिएट करने के लिए, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बनाया था। ठीक है, पैलेस्टाइन जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टाइन का, उनका इनिशियली कोई गुरिल्ला वॉरफेयर या मिलिटेंट ग्रुप नहीं था इनिशियली। ठीक है, एंड देवर मोस्टली ऑफ एक्टिविस्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हम देखने को आ रहा है। ठीक है, मेनली हम देखते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है जब यूरोप से जूस लौट रहे होते हैं। जो आसपास के जूस होते हैं उनका मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई they were wiped out or something. There were many Arab Jews. अरेबिया मतलब जो आप सीरिया, इराक, जॉर्डन और आपका क्या बोलते हैं टर्की, और इवन जो पैलेस्टाइन में जो ट्रेडिशनली जो जूस रह रहे थे, अरब जूस, they somehow managed to live and they were doing fine, all right. Okay. प्रॉब्लम शुरू होता है जब यूरोपियन जूस आते हैं इंस्पायर्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ जाइनिज्म। तो जाइनिज्म एक आइडियोलॉजी है, जैसे हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, जैसे हिंदुत्व आइडियोलॉजी बोलता है नेशनहुड फॉर हिंदूस, जायनिज्म आइडियोलॉजी बोलता है नेशनहुड फॉर जूस। एंड जूस आर, इट्स एथनो रिलीजियस ग्रुप, एथनिसिटी एंड रिलीजियस मिक्स्ड, जस्ट लाइक हिंदूस आर एथनिसिटी एंड रिलीजन मिक्स्ड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जूस टुडे यू सी इन इजराइल आर यूरोपियन डिसेंडेंट्स। उनके जो दादा परदादा या उनके पापा जो रिलेटिव है जो यूरोप से माइग्रेट होकर के इसराइल में सेटल हुए थे, वो लोग के बच्चे आज इसराइल में रह रहे हैं। सो बेसिकली यू कैन से इट्स मोस्टली यूरोपियन, वेरी फ्यू अरब जूस आर लेफ्ट। ठीक है, ये पहली बात हमको याद रखना है। इंडिया पाकिस्तान के साथ जो कंपेयर कर रहे हैं वो इतने बड़े उल्लू के पट्टे हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन होते समय भाई कोई माइग्रेशन ऐसे नहीं होता कि अलग स्टॉक ऑफ एथनिसिटी के लोग आकर के पाकिस्तान बना लिए थे। इंडिया पाकिस्तान बनाने वाले सेम एथनिक स्टॉक कहते हैं, एथनिक स्टॉक के। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का जो एथनिक स्टॉक है वो लगभग नॉर्थ इंडिया का ही है बेसिकली, उन्होंने बनाया। यू कांट से द सेम थिंग फॉर इजराइल पैलेस्टाइन। द अरब ज्यूस डिडंट से कि भाई हमको इजराइल बनाना है, एंड द अरब मुस्लिम्स डिडंट से कि हमको एक अलग स्टेट बनाना है पैलेस्टाइन। द यूरोपियन ज्यूस हु केम देयर, दे बिल्ट द मिलिटेंट ग्रुप्स, उन्होंने अपना एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया, उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और यूनियंस बनाए, और वहां से 1948 से उन्होंने अपने आस पड़ोसी के जो अरब से उनको भगाना शुरू कर दिया। ठीक है, एंड थैंक्स टू दैट व्हेन पैलेस्टाइन वाज प्रपोज्ड कि भाई 1948 में ये बॉर्डर्स होंगे इसराइल के और पैलेस्टाइन के, पैलेस्टाइन डिडंट अग्री टू इट। The reason that at that time in 1948 Palestine didn't agree to it was because the Jews, the European Jews who had made up a military base of their own, overran the neighbors who were mostly the Palestinian Arabs. And 90%, 80% of them are the Shia Muslims, by the way, just to put a clarification. Okay. उनको आप भगा दिए और भगा के उनका घर उनका प्रॉपर्टी ले लिए। बेसिकली दैट्स व्हाट दे डिड इन 1948, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज हकबा इन अरबिक। हकबा मींस
expulsion of the Palestinians from their own homes by the Jewish militant groups. Basically, that's what Hagbah means. And this word is banned. It's banned in Israel. You cannot talk about this. So, for all the ruckus of democracy which goes on there. Okay. 1948. And for this reason, Palestine, at that time, under the leadership of, if I'm not wrong, uh, Abdul Hussein Al Hajjaj, or I forget his name, but the leader, he didn't agree to it. And most Arab states also supported this stance of the Palestine at that time. Okay. 1967 starts a 6 day war, basically. What is the 6 day war is? Basically, the Arab states, neighboring states decide, let us supply arms and, what to say, militant weapons and the funds to the Palestinians, who at the time really didn't have the military base of their own, basically. So Arab neighbors started doing that. Iraq, Syria, Jordan, Egypt, Saudi Arabia, they started supplying. And in response, Israel has a 6 day war. So basically, in the 6 day war, Israel manages to win over all of their neighbors, and they capture the Golan Heights of Syria. They capture the Gaza Strip from the Egypt, and they also capture the West Bank as well. So, the traditionally speaking, what are the Palestinian territories today? Gaza and the West Bank. गाजा और वेस्ट बैंक जो है वो है आपका पैलेस्टाइन, और गोलन हाइट्स जो है वो आपका सीरियन टेरिटरी है, जिसको आज भी इसराइल ने कब्जा करके रखा है. ठीक है. सो गोलन हाइट्स को इसराइल ने कब्जा किया, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को इसराइल ने कब्जा कर लिया 1967 वॉर में, अपने सारे नेबर्स को हरा के. जब उन्होंने पैलेस्टाइन को सोचा कि हम हमला कर देंगे या फिर हम मिलिट्री सपोर्ट करके वो मैनेज कर लेंगे. ठीक है. तो ये 1967 का 6 डे वॉर हुआ. 1973 में इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में एक और नया एक ट्विस्ट आया. इस बार जो है जहां तक मुझे लगता है सरप्राइज अटैक हुआ बाय पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप, और इस पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप का नाम था पीएल, मैं फॉरगॉट, पैलेस्टीनियन लिबरेशन फ्रंट, कुछ ऐसा नाम था. It was Hamas नहीं था उस टाइम पे. 1970s didn't have Hamas, though there was a Muslim Brotherhood in the Gaza Strip which was attached to Egypt, and Muslim Brotherhood has been like founded in the Egypt, so there was a section of that in Gaza, but it was not that they were militant. मिलिटेंट ग्रुप आपका उस टाइम पे सिर्फ एक था 1960s और 70s के आसपास जो बनना शुरू हुआ था, वो मेनली 70s, बेसिकली 1970s टू बी ऑनेस्ट. वो था आपका पीएल एफपी, जिसको हम बोलते हैं पीएलएफपी, वाज द मिलिटेंट ग्रुप, एंड द मिलिटेंट ग्रुप ऑफ पीएलएफपी वाज इंस्पायर्ड बाय मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड माओइज्म, जो हम इंडिया में हम बोलते हैं नक्सलाइट्स, कम्युनिस्ट. थोड़ा बहुत उनका वो लीनिंग था. दे यूज्ड टू रीड दिस लिटरेचर्स ऑफ माओ, लेनिन, एक्सेट्रा टू थिंक दैट दे विल डू सम revolutionary overthrow of Israel and making some sort of socialist type environment. Basically, that was some sort of the idea to start with. Okay. 1970 का ये वॉर था जिसको बोला जाता है यॉम किपुर वॉर. Yom Kippur is a festival, Jewish festival, and on that day there was this surprise attack. In reply, the Jews also retaliated. The Arabs, instead of invading Israel again, what did they do? They started an oil embargo. तो जितने भी अरब कंट्री थे, सीरिया था, इराक था, सऊदी अरेबिया था, यूएई था, ईरान था. Iran was, I don't think there at the time, 1973, yeah, Iran was still pro-Israel by that time, sorry. So, ये जितने कंट्री थे उन्होंने ऑयल एम्बार्गो डाला. They said to United States that we'll stop supplying the oils. We'll stop supplying the land or supplying the oils. Get the fuck out. That's what the Arab countries did there. Okay. And by 1977, the prices had fallen for the crude oil, and US economy was going into some sort of trouble.
Jimmy Carter managed, who was the president at the time, he sort of managed this situation and he made a truce with the Arab leaders and they got along somehow. Okay. This was an incident of Yom Kippur. Okay. Come back to 1990s. In 1990s, Israel's prime minister was Yitzhak Rabin, who was for the peace basically. And in 1994, if I'm not wrong, there was an agreement between Yasser Arafat of Palestine and Yitzhak Rabin of Israel to have some sort of mutual peace and sort of collaboration, something. Okay, there was some sort of agreement, though a complete final agreement had not yet been reached, but there was some step taken. बिल क्लिंटन who was president of the US, जब मतलब अमेरिका के जो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उन्होंने इसको मतलब एक प्रमोट किया था इस पीस को एंड ये अग्रीमेंट हुआ था 1995 4 नवंबर को इट्जैक रैबिन को मार दिया गया और मारने वाला कोई नाथुराम गोडसे से कम नहीं था, मैं इतना ही बोल सकता हूं, वो भी फार राइट एक्सट्रीमिस्ट था, फार राइट जूविश एक्सट्रीमिस्ट, जिसने अपने ही इजरायली प्रधानमंत्री का असैसिनेशन कर दिया 1995 में। 2000 में इजराइल ने जो है वो वेस्ट बैंक छोड़ दिया and they proposed ये आपका Palestinian territory. Palestine didn't agree to it. One of the main reason they didn't agree to it was Benjamin Netanyahu was a right wing and they didn't trust him. The Palestinian leadership just did not trust the Benjamin Netanyahu, who came to power after the assassination of Yitzhak Rabin in 1995. They just didn't trust him. Yasser Arafat didn't trust. So that went over the board. Okay, even though Israel said we will recognize Palestine as a separate state, blah blah blah, but they didn't trust him. Okay, in 2005, Israel, vacated the Gaza. Okay, but here is another thing. This time they said we'll give two-state solution, take it, but that time they didn't take Mahmoud Abbas, who was there. For same reason, they didn't trust Benjamin Netanyahu. Why? Because all along, Benjamin Netanyahu was supporting Hamas. They were supporting Hamas to sabotage the Palestine Liberation Organization and their movement, basically. So anybody who supports Israel, any andhabat, he's indirectly supporting Hamas. And any Palestinian activist saying Hamas is doing great, folks, they're same, they're two faces of the same coin. They're achieving the same purpose. They are indirectly helping Israel. If you support Hamas, you're helping Israel. You support Israel, you are supporting Hamas. That's the thing. Palestine is like out of the equation in this case. Okay. 2006, Benjamin Netanyahu wins the election. And from there on, he actually starts funding Hamas and he brings Hamas back to power in the Gaza Strip. Hamas was started as an offshoot of the Muslim Brotherhood. As I said, Muslim Brotherhood was already there in the 60s and 70s at the Gaza Strip, but Muslim Brotherhood का कोई अपना कोई power नहीं था, political power. 1990s के बाद नेतन्याहू जब आया और 2006 के बाद नेतन्याहू ने जब उनको फंडिंग शुरू की 2009 के बाद से, लेट्स से, ठीक है, हमास कैप्चर द पावर ऑफ गाजा, तो हमास जो है वो पॉलिटिकल पावर को वहां कैप्चर कर लेता है। मैं कुछ ऐसे ऐसे न्यूज शेयर करना चाहूंगा, फिर आप सोचिएगा भाई मैं लिखूं फुल सपोर्ट टू इजराइल या मैं लिखूं फुल सपोर्ट टू हमास, बेसिकली। एंड ये इसलिए किया गया है, पहले तो खुद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना लो, काउंटर टू पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको फंडिंग भी करो, और वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन quote unquote बोलेगा we represent the Palestinian cause, and yet they do all the things which Israelis use as a justification to occupy West Bank. 2015 के बाद से ये हुआ है कि भाई इजराइल हमास को हेल्प कर रहा है, हमास इज अटैकिंग इजराइल, and Israelis instead of retaliating towards Gaza they mainly start retaliating towards West Bank. वेस्ट बैंक के सिविलियंस को अटैक करते हैं, वहां के लोगों का घर खाली करवा के, जो यहूदी है
उनको मूव करते हैं वेस्ट बैंक में और बोलते हैं भाई इनका घर लेके तुम रह लो, इजरायली सेटलमेंट्स बना लो। एंड बेसिकली दैट्स व्हाट हैज बीन हैपनिंग। नाउ हमास has changed its allegiance from Israel's quote unquote secret B team of Israel to a front team of Iran. Geopolitics ये है अभी। Until recently now, they were a secret B team of Israel and the Mossad. Now they changed their master's allegiance to Iran. Okay. Now Hamas becomes equal to ISIS. All the while, Netanyahu's administration until recently were supporting Hamas strongly. मेरे पास इसके न्यूज़ है, फैक्ट्स है, मैं सब बेच रहा हूँ। ओके, तो ये थोड़ा बैकग्राउंड आपको समझना होगा इजराइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट को। इट्स नॉट एज सिंपल एज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन, एनीबडी टेकिंग Israel support is a nuthead. Anybody saying I support Palestine and Hamas is also a nuthead, basically. अच्छा, कोई लिख रहा है ब्राह्मण स्टॉप पे। हाँ भाई बोलिए, आपको क्या बोलना। आज का टॉपिक इजराइल पैलेस्टाइन है भाई। आज का टॉपिक हम हिंदुइज्म पे बात कर रहे हैं। हाँ इजराइल। हाँ क्या नहीं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका क्या बोलते हैं, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। हिंदुइज्म नहीं है। अपन तो क्या करना है इजराइल पे? हाँ क्या बोल रहे हैं आप? इजराइल पे अपन तो क्या लेना देना है? हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना। आप अगर इजराइल को सपोर्ट करोगे तो आप हमास को सपोर्ट कर रहे हो। आप हमास टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हो, ये बता दो पहले। नहीं कर रहे, नहीं। लेकिन अभी आप इजराइल के जरिए उनको ही तो कर रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। ये हमास को इजराइल नहीं बना के दिया है भाई, ये देखो। अगर आपको नहीं पता है, आपको ये बात पता है कि नहीं पता है, ये बताइए। पता है, पता देख है। रहा था। हाँ, देखते रहते। क्या पता है आपको हमास के बारे में, ये देखिएगा। हाउ नेतन्याहू अलाउड हमास टू ग्रो व्हाइल अंडरमाइनिंग द अब्बास गवर्नमेंट इन पैलेस्टाइन। ये बात आपको पता थी कि इजराइल खुद एक टेररिस्ट ग्रुप सपोर्ट कर रहा था, और जब वही टेररिस्ट ग्रुप जो है, जब तक वो इजराइल के इंटेलिजेंस पे नाच रहा था वो अच्छा था। अब जैसा ही उसने ईरान की बात मानना शुरू कर दिया, ये हो गया आईसिस। ये आपको अजीब नहीं लगता है ये बात? जब अमीर था तो अमीर था ने दिया देता। क्या क्या क्या? ये तब लड़ाई अमीरता की है। हाँ ओके। अमीरता रहती थी। अमीरता ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बनाओ। अमीरता ने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया बनाया। अमीरता ने वियतनाम बनाया, मतलब नहीं बना पाए वहां पे। यानी इजराइल अमीरता ने बनाया ताकि वो अपना फायदा उठाते थे। हाँ, मेरे को एक चीज बताइए। भारत में जो हिंदू है, नॉर्थ इंडिया में, मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में उत्तर भारत स्पेसिफिकली में जो हिंदू और मुस्लिम है उनका जो एथनिसिटी है, और पाकिस्तान में जो हिंदू और जो मुसलमान है उनका जो एथनिसिटी है, कितना फर्क है जरा बताइए आप। अंतर है जाति। अगर आप बोल रहे हो ज्यादा, कितना अंतर है, मैं वही पूछ रहा हूँ, कितना ज्यादा अंतर वो है? देखना पड़ता, बंगाली है तो पंजाबी मुसलमान है। हाँ तो तमिल का मुसलमान है। नहीं, मैं हिंदी स्टेट वाले की बात कर रहा हूँ, जो आपका उत्तर प्रदेश बिहार से जो लोग माइग्रेट होकर के पाकिस्तान बनाए और जो उत्तर प्रदेश और बिहार में आज रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सिर्फ पंजाबियों ने मुसलमान तंत्री बनाया। हिंदी वाले नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो। हाँ, उन्होंने प्रपोजल किया था। बाद में हुआ ये कि ठीक है, उन्होंने जो हिंदी वाले थे ना, जमींदार,
सारे जमींदार जो है बट गए, जमींदार लोग अपना बोरिया बिस्तर खाली करके वहां चले नहीं गए। अभी भी इंडिया ही में है अभी। इंडिया में आप जो बात कर रहे हो ना जमींदार, यूपी बिहार में वो है अभी भी। हाँ वो जमींदार मेजोरिटी मुसलमान। वो, हाँ लेकिन अगर आप उस टाइम का रिकॉर्ड देखोगे ना मुस्लिम लीग का, तो बिहार से और यूपी से बहुत सारे जमींदार निकल गए वहीं पे, अदरवाइज नहीं किए होते तो और क्या जमींदार देखते हैं। कहाँ मैं ठीक रह है, हाँ ये क्या है ना, कहाँ मैं ये रहता हूँ वहाँ तो है बहुत। हाँ तो वो चले गए। ठीक है, उनको बोला जाता है मुजाहिर, पाकिस्तान में मुजाहिर, यूपी बिहार से जो आए थे। ठीक है, यहाँ देखिएगा पैलेस्टाइन था, वहां पे अरब मुसलमान थे, अरब यहूदी भी थे, कुछ अरब क्रिश्चियन भी रह गए। ठीक है, वो अपने तरीके से उस टाइम जिरीद पे चले वो, जाए जिरीद हाँ जिरीद और रोमानिया तंत्री में चले जाए। हाँ मैं आगे बता रहा हूँ। इजराइल आज आप जो देख रहे हो, वहां के जो यहूदी है वो क्या अरबी वाले हैं जो ओरिजिनली नहीं उसका नहीं नहीं सबके सब तो यूरोपियन है। हाँ यूरोप वही या यूरोपियन, अमेरिका। हाँ वही यूरोपियन लोग जो पूरे दुनिया में जो हम बोलते हैं ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वही लोग उनके दादा परदादा फंड कर रहे थे बैंक चला के, फाइनेंस के नाम पे। अब वही उनके बच्चे जो है वो इसराइल बना लिए और बोल दिए कि भाई ये हमारा है। तो ये क्या हुआ आप बताइए हमको। तो वो उनका होली लैंड है। हाँ लेकिन क्या होली लैंड का मतलब ये है कि आप जो है सारे लोगों को अटैक करो? पूरा हिस्ट्री आप पढ़ेंगे ना, उन्होंने मिलिटेंट ग्रुप बनाया था, पैलेस्टाइन के पास मिलिटेंट ग्रुप नहीं था पहले। अच्छा ऐसे तो इजराइल मुसलमान ने इजराइल पे कब्जा किया। हाँ तो मैं उसका जवाब दे चुका हूँ, हकबा। हकबा नाम सुना है आपने? ये नहीं शब्द अलाउड नहीं है इसराइल में। हकबा का मतलब होता है कि 1948 में जो तुम्हारे पड़ोसी जो पैलेस्टीनी है लगा, पहले फिलिस्तीनी लोग, उनको मार मार के उनके घर से भगाया गया और उनके घर में जाके कौन बसे? यहूदी लोग बसे। घर से निकल दे, चलो निकलो बंदूक के नोक पे। प्रूफ है प्रूफ। हकबा आप प्रूफ पूछ रहे? अच्छा ठीक है, मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, रुको। ये देखिएगा, ये है, ये 1 सेकेंड, सेकेंड, ये है हकबा नहीं नकबा, सॉरी नकबा, हाँ। ये पूरा पढ़िएगा, ठीक है, पूरा इसका एक काला छिट्टा खुला है जगह यहाँ पे, इसको बोलते हैं नकबा। हकबा नहीं, सॉरी नकबा है। ठीक है, मैंने करेक्शन कर लिया। ये अब चेक कीजिएगा, ठीक है, 1948 में हुआ था ये। ठीक है, क्योंकि तब पैलेस्टीन लोगों के पास खुद का कोई आर्मी या वो नहीं था भाई। बाद में उन्होंने बनाया, अरब देशों ने उनको पैसा दिया, हथियार दिए, बाद में उन्होंने अपना बनाया। ठीक है, लेकिन पहले नहीं था जब उनको, जब ये घटना हुई थी पैरेंटाइन नकबा। तंत्री थोड़ी ना था पहले। हम्म, पैरेंटाइन तंत्री नहीं था। बट पैलेस्टाइन जो नाम है ना, ये रोमन नाम है, आपको ये पता है? फिलिस्तीन्स उस वर्ड से आता है, ये रोमन नेम है भाई, आपको पता है ये? वो ये तब लगभग छोड़ो वो 2000, इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे सुन लीजिए मेरी बात, जो फिलिस्तीन आप बोलते हैं ना, पैलेस्टाइन शब्द का ओरिजिन, ठीक है, ये आज का जो इसराइल पैलेस्टाइन, ये वेस्ट बैंक और गाजा, इन सबको मिला के बोला जाता था उस रीजन को। और ये रोमन लोगों ने शुरू किया था आज से लगभग 2300 साल पहले। ठीक है, रोमन लोगों ने शुरू किया था। क्या और किया था। और उन उसका उसका एक प्रोविंस भी बोलते थे सीरिया पैलेस्टीना, जब रोमन लोग उस एरिया पे राज कर रहे थे, ये नाम भी था भाई उस टाइम पे। उन तो लोगों का धर्म क्या था। हाँ, रोम लोगों का धर्म क्या था। उस टाइम पे कहा जाता है रोम लोगों का पॉलिथिस्टिक धर्म था।
बुद्ध परस्ती वगैरह मानते होंगे उस टाइम पे, वो कहा जाता है। वो तो इजराइल और बदला ले रहे हैं ना मुसलमानों से। अरे भाई, ये मैं मुसलमानों से पहले का नाम बता रहा हूँ, एथनिसिटी का। ठीक है, मैं एथनिसिटी का नाम बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप मेरे को बताइए, ये जो पैलेस्टीनियन में जितने मुसलमान आप देख रहे हैं ना, ये जितने मतलब आप बोलते हैं ना ये टेररिस्ट, बट टेररिस्ट ग्रुप को बना के किसने दिया? आपको आपको पता है ये पीएल, पैलेस्टीनियन लिबरेशन फ्रंट जो था 1970s में, वो इस्लाम वगैरह कुछ खास नहीं मानता था, वो कम्युनिस्ट लिटरेचर पढ़ता था। आपको पता है ये बात? वो इस्लाम उतना खास नहीं मानते थे भाई। उनका ये कहना था कि हमारा जो है वो अरबी है, हमारा एथनिसिटी अरब है, वो ज्यादा मानते थे कहने में उसको। और करने में अंतर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। पता है। अच्छा, पता है। अच्छा चलिए, मेरे को एक चीज बताइए, इसराइल ने कितने बच्चों को मारा है? क्या? इसराइल इसराइल अच्छा, आप बोल रहे हैं इसराइल जो है हमास से लड़ रहा है, आतंकवादी है, तो भाई मेरे को बताइए सीरिया में बॉम्बिंग तो क्यों सही कर रहा तो है है। इसराइल? अरे सुनिए ना, सीरिया में बॉम्बिंग क्यों कर रहा है? फिर लेबनान में क्यों बॉम्बिंग कर रहा है? लेबनान और सीरिया ने तो हमला नहीं किया भाई इसराइल पे, प्रोटेस्ट उन पे क्यों दैट मीन बॉम्बिंग कंट्री बॉम्बिंग तो क्यों? प्रोटेस्ट कर रहा है। अच्छा, आप बोल रहे बशर अल असद टेररिस्ट है? हाँ है बिल्कुल। सारे बशर सारे मुसलमान चैलेंज है। अरे अरे सुनो भाई, आप पागलों जैसे बात मत करो। यूएस जो है आईसिस को सपोर्ट करता है, आईसिस को सपोर्ट कर रहे हो क्या? इसराइल आईसिस को सपोर्ट करता है, आपको पता है ये बात? नहीं करते बिल्कुल, उन्हीं लोगों ने करते बनाया। हैं। हाँ हाँ हाँ। अब बताइए, बशर अल असद बेटर है कि आईसिस बेटर है? आप बताइए। इन आइस अब बशर अल असद बेटर है कि आईसिस बेटर है, मेरे को ये बताओ। दोनों बेकार है। अरे ठीक है, मैं मान लिया, चलो दोनों ही बेकार है। बेकार में से कौन बेटर है, मैं ये बोल रहा हूँ। आई है। हाँ, क्या? फिर से बोलो। बटर यार बटर। हाँ, तो हम वही तो बोल रहे हैं। आपने ये पढ़ा है कभी बात सोशलिस्ट पार्टी? उसका नाम सुना है आपने कभी? व्हाई यू सपोर्ट पैलेस्टाइन? हाँ, तुम पैलेस्टाइन तो सपोर्ट क्या कर रहे हैं? मैं बोलता हूँ टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता हूँ। पैलेस्टाइन एक सेपरेट स्टेट बनाओ, ठीक है, और इसराइल एक सेपरेट स्टेट बना के रखो। और इसराइल को बोलो कि वो जो वेस्ट बैंक में जो सेटलमेंट है वो उसको खाली करे, ठीक है। और पैलेस्टाइन हमास को मतलब हम पैलेस्टाइन का जो लीडर है मोहम्मद अब्बास, वो हमास को सपोर्ट नहीं करता। आपको ये पता है बात? ये मोहम्मद सब अब्बास। अमेरिका की चाल है। अमेरिका हरामी है, वही सब करा रहे हो। अरे गजब का यार, अभी आप अमेरिका का नाम ले रहे इल्यूमिनाटी है, हो, उनसे माया जाल है। लेकिन भाजपा तो समर्थन करता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी तो गले मिलते हैं भाई, अमेरिका की हर बात मानते हैं भाई। तो हाँ वो हाँ तो ताकतवर है वो तो दोस्त बने गए ना। हाँ, क्या क्या क्या? ताकतवर का दोस्त हर कोई बनता। अच्छा, ये आप जानते हैं ये आरएसएस का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्या? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, हाँ है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? अच्छा, तो हम्म। अच्छा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है फिर? नहीं वो नहीं है। लेकिन वही लोग तो मुस्लिम मंच बनाए हैं, वो लोग, बहुत सारे मुसलमान तो आरएसएस में जाते हैं, उन लोगों ने बनाया है राष्ट्रीय वो तो मुस्लिम मंच। मजबूरी है, दिखावा है सब। मोहन 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 भागवत खुद बोलते हैं भाई, मोहन मोहन भागवत खुद बोलते हैं भाई, मुसलमान भी हिंदू है हमारे देश के हैं भाई। तो मोहन हाँ वो भागवत को है भी ना। बोल दो ना terrorist। हाँ, तो मोहन धर्म भागवत को बोल परिवर्तन दो हो terrorist। गया। अच्छा, आपको धर्म से मतलब है कि आपको अच्छा चलो, धर्म परिवर्तन नहीं किया, बहुत सारे मुसलमान एथिस्ट, आप उनको क्या बोलोगे? वो बोलेंगे धर्म हमने परिवर्तन नहीं किया है।
हाँ बट हम इस्लाम को नहीं मानते हैं, हमारा इल्लाह में अल्लाह वल्लाह में कोई विश्वास नहीं। लो चले गए, ये चले गए। तो ये नकबा है, ये जरा चेक कीजिएगा एक्चुअल में बात क्या है। ये चले गए, जवाब नहीं दे पा रहे थे शायद, या बोर हो गए, तो ये चले गए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से हिंदुइज्म पे बात करेंगे। तो हाँ, ये मेस्सिन अच्छा पूछा है, राष्ट्रीय मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्या? हाँ बिल्कुल, ये इनके अकॉर्डिंग वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वही ना, पूछिएगा इनसे, वहीं पकड़े जाएंगे ये लोग। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ एक और न्यूज। ठीक है, ये वाला। Hello, brave, beautiful Blossomer. Veiled Rose, you can join the live stream. You can click on the StreamYard link. We will have to talk on this Israel-Palestine issue. It's a very sensitive issue, and I don't think you can have any blind take on this, and you need to be careful. Okay, you don't want to play into somebody's political hands here. Okay, so yeah, you are free to join the StreamYard link. Veiled Rose. तो मैं एक और दिखा ही देता हूँ न्यूज सबको सबको यहाँ पे। ये आपका आता है, तो अभी आप सोचेंगे कि उस रीजन में इतने सारे यूरोपियन इजराइल आए कहां से। ये आपका शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाल्फोर डिक्लेरेशन से। तो जायनिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक बाल्फोर डिक्लेरेशन बनाया। ओके, आई थिंक समबडी, ब्राह्मण स्टॉप पे है, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, मैं आपको ऐड नहीं कर सकता। अच्छा, अभी आपका डिवाइस है, चलो ऐड करते हैं। हाँ, तो बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था 1919 में, और 1919 में बाल्फोर डिक्लेरेशन साइन किया गया। जो यूके का उस टाइम का जो लीडरशिप था पॉलिटिकल, और उन लोगों ने ये किया कि भाई जो ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन है, जो उन्होंने ऑटोमन एम्पायर से जीता था, वहां पे वो लोग जो है एक जूविश सेटलमेंट्स और जूविश लोगों को बसाने का काम करेंगे। और वही हुआ 1990 के बाद से। बाल्फोर डिक्लेरेशन जब साइन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विद द ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत सारे यूरोपियन यहूदी जो है वो माइग्रेट होना शुरू किए वहां पे। कहाँ पे आप शुरू किए? पैलेस्टाइन, जहाँ बोला जाता है। उस टाइम उसको सिर्फ पैलेस्टाइन ही बोलते थे, ब्रिटिश मैंडेट। ठीक है, वहां पे सेटल होना शुरू हुआ। फिर हम बाद में एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, वो है हवारा अग्रीमेंट बिटवीन हिटलर एंड द ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिटलर के बीच और जो जर्मनी में यहूदी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच एक अग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था हवारा अग्रीमेंट, जिससे लगभग 50,000 यहूदी जो है वो ट्रांसपोर्ट किए गए फ्रॉम जर्मनी टू इजराइल। ये जरूर चेक कीजिएगा, हवारा अग्रीमेंट। तो वो अपने हॉलैंड जा रहे हैं ना, हम्म, अपने हॉलैंड नहीं जाएंगे, जाएंगे। हाँ तो भाई मेरे को एक चीज बताओ, अमेरिका में इतने सारे यहूदी क्यों रहते हैं? अमेरिका में कौन सा होली लैंड है वहां पे, मेरे को ये बता दो। टैलेंट भाई, टैलेंट। तो ये हवारा अग्रीमेंट है, जरा पढ़ लो ये वाला, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट ये वाला बात, अगर आपको नहीं पता है तो। ये है इजराइल में। अगर इजराइल के लोग वहां के प्रधानमंत्री से इतने नाखुश है कि वो बोल रहे कि प्रधानमंत्री पद छोड़ दे और चले जाए, सरकार छोड़ दे। 80% यहूदी जो है इजराइल के, वो बोलते वो नाखुश है वहां के प्रधानमंत्री से, हमास हमले के लिए। और हमास हमले के लिए वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराते हैं। लीजिएगा, ये देखिए, मिडिल ईस्ट हाउ नेतन्याहू अलाउड ये। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक और सर्वे यहाँ पे। ये आपका आता है, ठीक है, कंट्री इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं। अरे ये पढ़िए ना आप, ये वाला आप पढ़िए, आप व्हाट्सएप चेक करें। ये देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, मेजॉरिटी इजरायलीज ब्लेम गवर्नमेंट नेतन्याहू रिजाइन। मतलब जो बहुसंख्यक जो यहूदी है, इजरायली है, वो वहां के सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, अपने देश की सरकार को हमास हमले के लिए।
ये देखिएगा, ये सच्चाई है। ये कोई न्यूज मीडिया नहीं दिखाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, आधी अधूरी बात बताई जाएगी और लोग मान लेंगे। ये देखिएगा। और नेक्स्ट ये मैं दिखाता हूँ। पहली बात, इंडिया तो क्या फर्क पड़ता है, इजराइल हमारे मरे हैं आपस में, धर्म रहे। हाँ, हाँ, इजराइल से अपन को क्या लेना देना। अरे आप ये देखिएगा, यहाँ असासिनेशन पे ऑफ कश्मीर में असासिनेट। बराबर मार दे, तब क्यों नहीं बोले हैं। हम्म। कश्मीर अच्छा, में बराबर मार दे, तब तो कहाँ आप, आते हाँ हैं। हाँ, हमारा पुराना वीडियो ता- देख लो ना। हमारा पुराना वीडियो देख लो। और हाँ, उस टाइम पे सरकार किसकी थी भाई, जब कश्मीर में लोगों को मार के भगाया जा रहा था? सरकार किसकी थी, जरा चेक कर लो ना, गूगल पे चेक करो। चांदरेती थी। चेक करो ना, 1990 गवर्नमेंट किसका था, जरा टाइप करो गूगल पे और शेयर करो स्क्रीन। अब मैं तो शेयर करो, कांग्रेस का था। शेयर करो स्क्रीन, हम भी देखना चाहते हैं। 1990 ये गवर्नमेंट मुझे इन नहीं इंडिया। आता, हाँ, मुझे चैट करना नहीं आता। अच्छा, स्टार्ट करना नहीं आता और आप स्ट्रीम यार्ड ज्वाइन किया, ठीक है, चलिए, मुश्किल से आपने ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस की थी। तो वीपी सिंह कौन सा पार्टी का था भाई? जनता दल कौन सा पार्टी था, मेरे को ये बताओ। कौन था भाई जनता दल उस टाइम पे? अरे वो तो अनाक्षर वाले हैं बे हरामी। वीपी सिंह। अनाक्षर दे दो, ओबीसी तो अनाक्षर दे दो फालतू में। हाँ हाँ मंडल हाँ। उनका उनका समर्थन कौन कर रहा था, जरा बताओ। समर्थन कौन, कौन? हाँ, यही हमें नहीं पता। आडवाणी। आडवाणी कर रहे थे, आडवाणी और ज्योति बासु, ले कम्युनिस्ट जब कर रहा था। अरे सच्चे, 1989 इलेक्शन खोल के देख लो, जेडीएस का, जेडीएस जो है, जनता दल को 144 सीट्स आया था, कांग्रेस को 197, बीजेपी को 84। ठीक है, सीधे सीपीआई सी आया था सीधे लगभग। ठीक है, बेवकूफ समझ रहे हो? उनके उस टाइम पे उनकी सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार। लेकिन न्याय मिलना चाहिए, हम लोगों तो ब्राह्मण हो तो न्याय मिलना चाहिए तकमीरन को। उन्हें जाए वहां बचाए, जैसे इजराइल लोगों ने बचाओ। हाँ, वहां पे अरे लैंड। अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब सुनिए ना, मेरे को एक चीज और बताने दीजिए। आपने आपने ये जो क्या बोलते हैं, मैं भूल गया इसका नाम क्या है, ये आपका पीपीपी जो है कश्मीर में, ठीक है, फाउंडर, उसमें ये कश्मीरी एक सेपरेटिस्ट ग्रुप को जब होम मिनिस्टर बनाया जा रहा था, तो तब बीजेपी ने क्यों विरोध नहीं किया था? वीपी सिंह की सरकार जब होम मिनिस्टर बना रही थी, ठीक है, उसका नाम मैं भूल गया। उम, अरे यार, क्या नाम था, रुको मैं चेक करता हूँ ये अरे बीटीपी हिंदू पार्टी थोड़ी ना है, अरे सुन हम लो। उनसे मोहताज थोड़ी ना है। अरे सुन लो यार पूरी बात। ठीक है। सब हरामी है, सब पार्टी। हाँ, तो अभी अब हरामी हो, अभी हरामी है, हाँ। ये तो न्याय मिलना चाहिए क्या। मुफ्ती मोहम्मद, हाँ, महबूबा मुफ्ती का जो पापा था, मोहम्मद मुफ्ती सईद, तो इसको होम मिनिस्टर बनाया जा रहा था कि ये बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट भड़काऊ भाषण दे रहा था और उस टाइम पे शांति भंग करने का प्रयास कर रहा था। और ये क्या बोलते हैं, बिट्टा कराटे जो सेपरेटिस्ट था, जिसको पाकिस्तान से फंडिंग आती थी, ये उसका समर्थक था। तब तो बीजेपी ने विरोध नहीं किया भाई, बोल दिया हाँ 140 के ऊपर सीट है आवाज नहीं हमारे, आ रही। हम समर्थन कर लेते हैं, वहां समर्थन करने चले गए। अब बिट्टा कराटे को पकड़ के जेल में डालने का काम किसने किया? ये बिट्टा कराटे जो था, उसने मरवाया था कश्मीरी पंडित को, और उसको पकड़ के डालने का काम किसने किया था? उस टाइम की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने किया था, उन लोगों ने। तो खैर, ये तो पूरा अच्छी बात है ना। हाँ, तो हम वही तो बोल रहे हैं। अब आप अभी थोड़ी देर पहले आप अपना स्टेटमेंट क्या दिए थे, जरा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आप कुछ बोल रहे क्या थे। चाहिए रे बताओ।
अभी आप बोल रहे हैं थोड़ी देर पहले बीजेपी हिंदुओं की पार्टी नहीं है, बीजेपी वो नहीं, बीजेपी बीजेपी समर्थक तो वही समझ हाँ रहा है नहीं कि है वो ना बरो लोग अच्छा। समझ रहे हैं अभी। नहीं अब हमारे जाते बहुत से लोग आ रहे तो नहीं समझ रहे कि बीजेपी हिंदू की पार्टी नहीं है ना ब्राह्मणों की पार्टी है। सब धनटोल है बचवाते। हम अपनी नई पार्टी बनाएंगे फिर ब्राह्मणों का राज हो रहा है हिंदुस्तान में। हाँ ये है ना। अच्छा, ये एक चीज बताइए, इस्लामिक इन्वेजन से पहले ब्राह्मण का राज नहीं था क्या? था अभी भी है थोड़ा थोड़ा। अभी भी है? तो फिर भी मान लो ना, देश में ब्राह्मणों की वजह से बर्बाद हुआ फिर इसका मतलब कहाँ हुआ। वो धर्म धर्म में मिलावट का काम भी ब्राह्मणों ने किया फिर, है? कौन। धार्मिक अरे वे तब हाँ तुन्नी हाँ। अलग। वे तुन्नी अलग है हम तुन्नी अलग। अरे हम वाह, अरे वाह। चिप्पावन है चिप्पावन। हम हाँ, बड़े अच्छा वाले चिप्पावन अच्छा। है हम। महाराष्ट्रीय हाँ चिप्पावन। हाँ मेरा वैसे ही हाँ। है छोटे जात के ब्राह्मण मादल। इसलिए इसलिए वो आप वो क्या बोलते हैं, 500 जो क्या है महार दलित लोगों ने 25,000 की टुकड़ी को हरा दिया भाई। नकली फेर तोरी दद्दार दद्दार लोग। अच्छा अच्छा। अंग्रेजन तो था हमारा राज था तुम लोगों ने दद्दारी करी। दद्दार अच्छा। लोग। हम हाँ लोगों का हाँ। राज था हुकूमत करते थे। ये औकात थी तुम्हारी। अच्छा, हाँ। अभी अभी आप अपना सुर बदल लिए यहाँ पे। ये इनका सच्चाई है। खैर, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये असैसिनेशन ऑफ इट्जक राबिन पढ़ लीजिएगा। एक दक्षिणपंथी नाथूराम गोडसे टाइप का जो व्यक्ति था, उसने मार दिया था भाई। नाथूराम गोडसे मानसिकता वहां पर भी है। नहीं ठीक वो है। तो जलत किया था। अरे ये सब पढ़िएगा। नेतन्याहू इजराइल मोसाद चीफ दोहा कटार। तो मोसाद जो है वो कटार में जाके बोल रहा था हमास को फंडिंग करो, गो एंड फंड हमास। ठीक है, नेतन्याहू खुद इसका सपोर्ट करता था इसराइल के मोसाद से कि आप जो गाजा में जो हमास है उनको पैसा दिलाओ। और ये वहां के ही न्यूज़पेपर का मैं दिखा रहा हूँ, ये जाके चेक कर लेना। एवरीबडी शुड चेक हम्म। दिस आउट। ठीक है। और ये नेक्स्ट में दिखा और ठीक है ठीक है। हमें हाँ। क्या मतलब इजराइल पे। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मीको पेलेड, इनका आप ब्लॉग पढ़िएगा मीको पेलेड का। आप बोल रहे हैं ना इसराइल समर्थक, ये यहूदी है और ये इजरायली है। ठीक है, ये इजरायली है मीको पेलेड। और ये खुद बोलते हैं इसराइल जो कर रहा है वो गलत है। ये खुद क्रिटिसाइज कर रहे गद्दार हैं। तो पैदा हो ही जाते हैं आजकल। यार नहीं, इसके पापा जो है फाउंडिंग फादर थे इसराइल के। इसके जो पापा थे ना, इसराइल की आर्मी बनाए थे इसके पापा ने, फाउंडिंग। तो क्या फर्क पड़ता है गद्दार तो होते ही है। गद्दार थे, गद्दार थे। तो इसका मतलब आप कोई कल्ट बना के रखे हो क्या? मतलब जो कौन सा चल। चितपावन, नहीं नहीं नहीं, चितपावन ब्राह्मण बन जाए तो वो अच्छा है, और कोई और हो जाए तो वो गद्दार है। कल्ट बना के हाँ रखा है। कल्ट है आपका, हाँ। दर्द नहीं सच्चाई है। हिस्ट्री पढ़ो बेटा। 500 अच्छा, लोग। तुमने ये क्यों चित गद्दारी करी। तुमने गद्दारी क्यों करी। अंग्रेजन से साथ मिलते हैं। सुन लो ना, पहले पहले किसी को इतना मजबूर कर दो कि वो दुश्मन का साइड ले ले, और फिर बाद में उसी पे चिल्लाओ गद्दारी का। है? किसने फोर्स किया लेकिन था को इतना ब्रिटिश पे के साइड चलने के लिए? प्रूफ ये सबूत दिखाओ प्रूफ प्रूफ दे कहाँ पे वो तब किया था भेदभाव। प्रूफ दो सबूत दिखाओ। हाँ, तो ये जो शिवाजी का जो बेटा है ना, उसका अंतिम संस्कार ब्राह्मणों ने क्यों नहीं किया फिर? क्यों नहीं किया भाई? किसने किया? क्यों नहीं किया। नहीं किया हाँ, तो नहीं किया हमारी मर्जी। नहीं क्यों नहीं किया ना, यही पूछ रहे हैं। उनका मन नहीं हो रहा वे राजा है। ये जो संभाजी था ना, जब औरंगजेब ने उसको काट डाला, और जब उसको हम्म। काट के था, तो कोई ब्राह्मण जाके उसकी अस्थियों को उठा के कोई मतलब अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया फिर? हाँ, क्यों नहीं किया भाई? और महान अच्छा लोगों प्रूफ ने, नहीं है यार इतनी पुरानी हिस्ट्री प्रूफ सबूत नहीं है ना कैमरा थे ना इंटरनेट था। हाँ ये अच्छा, इंटरनेट कैमरा नहीं था ना, तो आप इंटरनेट कैमरा यूज नहीं करते होंगे फिर। आप फोन भी यूज नहीं करते क्यों। होंगे, इलेक्ट्रिक।
नहीं, उस आप जो है उस टाइम पे जी रहे हैं ना, आपके लिए कौन तो ठहरा? भाई, आप जो है भाई पास्ट में भी जी लिए थे, आपने सब कुछ जी लिया था ना। आप 1990 में भी थे, आप तो 1800 में भी थे। अरे आपको पता था कौन गद्दार है, आपने सब हिस्ट्री भी देख ली अपने सामने। तो आप तो शायद टाइम ट्रैवल करके आए ना, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, तो इसका मतलब आप इंटरनेट यूज नहीं करते होंगे फिर। आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, इसलिए। अच्छा, हिस्ट्री है। अच्छा, स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री है। फिर बताइए ना, ये ये एवोल्यूशन भी आपके लिए गलत होगा फिर, क्यों? नहीं वो चाहिए, इतना भी तो नहीं हूँ मैं। अच्छा, ये देख लो भाई, 3.5% लोग हैं। और इतना तो प्रूफ नहीं है, हम लोग अरे देख, 12-10% है। अरे भाई सेंसस करवा के देख लेंगे ना, सब पोल खुल जाएगा, ठीक है। उतने फर्क नहीं पड़ता, उतने फर्क नहीं पड़ता, रात तो हम ही करेंगे। हाँ, से आ- 80। आवाज अच्छा, पॉपुलेशन डॉट मैटर। ये ओबीसी जिनको बोला जाता है, या वो जो नाली साफ करने वाले लोग हैं, वो लोग क्यों राज नहीं कर सकते भाई? उनका बच्चा जो है वो इंजीनियर डॉक्टर बन के आगे क्यों नहीं बन सकता, वो लॉयर क्यों नहीं बन सकता, बताइए ना। नहीं आधे बने तर थे, नहीं वो भरने ही नहीं चाह रहे हैं, उनकी मानसिकता ही ऐसी हो रही। आप पढ़ने देंगे तब ना, पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है तो पढ़ेंगे कैसे वो? आप उनके सामने मंदिर रख दोगे तो अरे वो मैं जामू क्यों नहीं, उनके घर पे जाके रोकता हूँ क्या? तो आप पढ़ाइए ना, उन लोगों को बोलिए ना, आप जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में जाइए ना पढ़ने के लिए। आप उनको फ्री में किताबें दीजिए, उनको फ्री में हेल्थ केयर दीजिए। क्यों दूं? क्यों दूं? क्यों दो फ्री मतलब, का ये माल है, होता फ्री का माल है क्या? अपने दम पे है। जो आगे बढ़ो। अरे ये सुनिए ना, ये सारा ये जो चीज आप बता रहे हैं ना, फ्री एजुकेशन फ्री हेल्थ केयर, वहां पे तो भाई हम्म। चिदम्बरम जब जर्मनी में यूरोप में जाता है वहां पे तो फ्री का ले रहा है, और यहाँ पे उसको फ्री में देने में प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ? यूरोप में जाता है, अमेरिका में जाता है, फ्री हेल्थ केयर फ्री एजुकेशन वहां पे ले रहा है, और यहाँ पे जो तब दलितों को। क्योंकि तंत्री दे रही है उनको, अगर तंत्री मना करते तो नहीं लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, तो हम भी वही बोल रहे वहां हैं ना, चाइना के यहाँ लोग पर भी नहीं देना देते, चाहिए। सीधे आपको पता है, चाइना के लोग नहीं देते अच्छा, फ्री में। कहते हैं फ्री में एजुकेशन है, फ्री में हेल्थ केयर नहीं, लेकिन फ्री नहीं में है, मैं जाता था है। वहां पे, फ्री में तो नहीं देते जनता। अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, मैं आपको कुछ चाइना के ही अकाउंट दिखा दूंगा ट्विटर में, जाके उनको क्लोजली बात करके देख लेना भाई। हम्म। ठीक है, ट्विटर में इतने सारे चाइनीस अकाउंट्स है ना, वो वहां के स्कूल के बारे में डाल रहते हैं। ठीक है, और अरे वहां का जो, चाइनीज तो चल रही है, अरे चाइनीज सुनो ना, लोग। वहां का गवर्नमेंट स्कूल जो है ना, इंडिया का हम्म। बेस्ट प्राइवेट स्कूल जितना बराबर है, वहां का गवर्नमेंट अरे स्कूल। रोबोट बना रहे, रोबोट रोबोट बना रहे वे लोग तो। रोबोट बना रहे, फ्रीडम और ऑफ आप। माइंड नहीं है, फ्रीडम ऑफ अच्छा, माइंड नहीं है। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए, वर्ण व्यवस्था में बहुत फ्रीडम ऑफ माइंड दे रखा है, बहुत अच्छा है। वर्ण संकरता को वर्ण संकरता बोल दीजिए, सबका सुसु निकल आ जाता है यहाँ पे। अरे अब हमारा धर्म छोड़ दीजिए ना, हम जबरदस्ती थोड़ी ना बांधे। हाँ, जबरदस्ती नहीं बांध रहे ना, ये इसलिए ना, जैसे ही बात आती है शादी वगैरह पे, अचानक से हमको सुनने को मिलता है ऑनर किलिंग्स। कभी बाप अपनी बेटी को मार देता है, कभी भाई अपने बीवी, मतलब क्या बोलते हैं, सिस्टर को मार देता है, बहन को मार देता है रूरल हाँ। है वो तो, अर्बन में नहीं है, अर्बन। हाँ, ये अर्बन में नहीं है ना। एक काम करिए ना, यूपी में वो कानपुर वगैरह का केस देख लीजिए, रिसेंटली हुआ था वहां मैं पर। यूपी, अच्छा ठीक है, देख लें। हाँ, तो ये है भाई, इनको पढ़ लेना, ये वेबसाइट में ये सब आंखें खोल के रख देंगे, ठीक है। तो मैं छतरू, मेरे साथ तो नहीं हो रहा। चलिए दलित चलिए। बराबर, दलित और ओबीसी मरे हैं आपस में, हम तो चुप्पापन नहीं, चुप्पापन। अरे भाई, हम हम बोल रहे हैं ना। हमारा डीएनए, हमारा अरे डीएनए। अरे सुनिए ना, ये वर्ण व्यवस्था जो है ना, ब्रिटिश लोगों ने मिलाया है भाई, आपको पता नहीं है, इल्यूमिनाटी लोगों ने मिलावट किया है, हाँ। चलिए, इल्यूमिनाटी लोगों ने ना वर्ण व्यवस्था को मिलावट किया है यहाँ पे। अरे वर्ण मैं व्यवस्था आपसे ज्यादा समझदार हूँ, ठीक है, आप उल्लू ना समझे हमें। वर्ण व्यवस्था जो है ना, अंग्रेजों ने और इल्यूमिनाटी लोगों ने बना के दिया है। चलिए, बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। हमें बाप दादा ने बनाई, बताओ।
नहीं 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 नहीं, इल्यूमिनाटी ने बनाया है, रॉथस्चाइल्ड लोगों ने बना के हम दिया। मैं जो कह रहा था बराबर हो तो न्याय मिलना चाहिए, तब मेरे में जब मेरी बराबर हो तो न्याय मिलना चाहिए। हाँ, बस। नेक्स्ट टाइम आइएगा, हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, हेलो वेल रोज। Oh, hello. आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आई एम वेरी गुड। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। sorry, I wasn't मैं पहले सोच रही थी कि मैं नहीं आऊंगी लाइव पर, लेकिन while I've been listening to the guy that's talking, it was just too funny not to join. Yeah. So I hope it's okay. I'll probably talk English. हम्म। So yeah, so what the gentleman was saying just before about Dalit Lords, they can go to school and they can use YouTube and educate themselves and nobody's stopping them. अगर आप उसको if you're giving them such low wages and such poor housing conditions, and they're having to work God knows how many hours in horrendous conditions. It's not fit for animals. And you're expecting them to study a degree via YouTube. And It's insane. and this guy is like, he said in China you pay for the education. No, in China you don't have to pay for education. Government schools are absolutely free. Government Exactly. schools education, government schools I'm talking about. Okay, healthcare, I don't. Exactly. Schools in China are completely free. Okay, Mm. it's straightforward line here. Okay, and he said, पावन वी आर द सुप्रीम, हमको ही रहना चाहिए। 80 to 70% ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं भाई, ये उठा के देख लो। Majority Oh, are there Brahmins only. Who are the majority teachers in schools? Brahmins, majority from that background. How do you expect that they will want SC and ST to come and learn the subject and become as educated as others? I mean, that's exactly. that's Yeah, in the the hope. UK, we have in the 1970s we had a very class-based education system. So it was grammar school, comprehensive schools, and you could go to private schools as well. And it was very difficult for people from comprehensive schools, from ordinary schools, to progress because they weren't taught a lot of things. So, they couldn't have progressed to university and stuff because they were taught cooking and woodwork, and जैसे कि जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, ऐसे उसकी घर की सिचुएशन देखकर आपको पता लगेगी कि to stay sane, it's really hard. अगर आपको सारी परिवार एक छोटी से कमरे में रहना पड़ता है, there's no toilet to use, you have to go to the street, there's no fresh water to drink, how are people, but yeah, in the UK, in the West, we have in, we have free healthcare, we have free education, और सभी लोग को अगर कुछ भी हो जाए हमको, if while we're at work or something like that, अगर हम accident में पड़े ऐसे कुछ, we know that we can go to the doctors or the hospital and we don't have to worry about money. If somebody in India falls ill or has an accident, their whole family could lose their livelihood. I am getting off the trail, but मुझे ऐसा लगता है कि जिस लोगों को पैसा है, वो नहीं चाहते हैं कि बाकी सबको आराम की और इंसानियत की जिंदगी मिलना चाहिए. They don't want us to have dignity. Yeah, because in the UK we have these things, but the powerful in our country are always trying to take those things away from us. And
going back to the situation in Israel and Palestine, when it suits the rich, they will work together. It doesn't matter अगर जैसे कि Israeli government और Hamas एक साथ जुड़ी हुई थी. There was also the Mujahideen and the US, and they worked together to defeat the USSR. उसको कुछ भी they don't care about anything apart from their power, their wealth, and the control. And screw the rest of us. बाकी सब लोगों को फर्क पड़ता है, लेकिन वो तो they can stay in their ivory tower and do whatever they want. I've been seeing photos on social media, or I've seen a lot of Jewish people putting up plaques against the occupation, the bombardment of Gaza, because they know what it's like to live in fear and to be attacked, and they don't want another human being to be attacked. They don't care about the geopolitics of it all. They just see the humanity of it all. So yeah, sorry, I went on a bit. I didn't mean to cut. Okay. Okay, I guess you made your point. And I just said that when the same Brahmins go to West Europe and they have free education in universities, free healthcare in European countries and US, they're absolutely okay with that freebie. But when you talk about giving freebie to Dalits and SC, ST, OBC people or underprivileged, you have a problem. You expect them to pay that. हिपोक्रेसी बहुत ही है ना दुनिया भर के. देखो, जैसे कि मुसलमान लोग जो यूरोप में आते हैं, वो बात कर they're running away from Islamic countries because they can't live there. It's not, it's inhumane living conditions there, workers' rights and everything I was discussing. No healthcare, no education. They come to the UK and the West. वो यहाँ पर सबकी they take advantage, मजा लेती है सब कुछ की, सेक्युलर जो है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सब कुछ. लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि सब जगह इस्लामियत और मुसलमान बन जाए. It's crazy and it's hypocritical. Yeah. And I have to honestly say this. Capitalism is probably the greatest financial invention of the last 400 years, which has sense as a tool for making profits. Basically, that's what capitalism does. And the migrant crisis of Europe, I largely blame to the failed corporate structure in the Europe, the failed private capitalism. They just Exactly. the organization fails to keep up with the surplus and the profits and the rising interests. Where the heck they get the cheap labor? The European laws are meant for their citizens, where it is mandated that you have to pay minimum certain amount for their labor incomes for certain hours. You have to pay it mandatory, even if it means it costs you fortune or the profit. However, how do I change the equation? The only thing that changes this equation is bringing in the immigrants. European Union, basically it's a capitalist union. Big conglomerate. Agreed. Okay. How do you get off the debts? You have the debts of World Bank, you have so many other crisis financial. Recently, Swiss Bank almost collapsed. It literally collapsed. How do you get that back? Migrant laborers provide you the cheap. They are left hopeless in their countries. In such a I was going to just say, who creates the problems in their countries? A lot of the time, because these big corporations refuse to pay decent wages and tear down the trade unions, I'm really annoyed that I'm not online at the minute. Well, I'm on my phone doing this, but I'm not online. But you hear and see stories of big companies like Coca-Cola murdering trade unionists.
and Yeah, human rights activists who threaten their interests. yeah. It's absolutely bonkers. Absolutely, and you're right. So the same country create a crisis in some country, making them forced to migrate to the capitalist hubs, and where you tell them, hey, we have a better hope for you. We are paying you this much, although it is Mm, less than standard for the average citizen of that country. It's less than that standard. Okay, but the person who migrates there thinks it's a great deal because I escaped a literal hell. Why not mm. satisfy with? They get satisfied with. और उसको क्या पता कि जहाँ वो आ रही है वहाँ भी it could become hell because our trade unions and our working conditions in the West are constantly under threat. यहाँ पर भी लोग को difficulty it's so difficult to pay gas and electricity bills. We have people using food banks, like going to charity for food because they can't afford the high food prices. The And, rates of, yeah. and on top of it, what we have in Europe and US especially is socialism for the private corporations, not for बिल्कुल. socialism for the private corporations. Okay, literally. And what the private corporation does is CEO earns more than 300 times the wealth of an average median worker. Basically, that's the issue. Palestine issue is also the same. It's not much different. You know, Yeah. for top five military companies, their stocks went up due to this war, Israel Palestine. Their stocks went up, skyrocketed in the market from nowhere. Oh. Ninth. Wow. And that tells you who is literally profiting. Israel is not benefiting. The civilians are not happy. Gaza and Palestine people are also not happy. Hamas Yeah. gets, IDF gets the weapons. That's it. They fight it out. The seller of the weapons, it, the big corporations. Yeah. And Exactly. it's a $2.5 trillion profits. $2.5 trillion. Out of the $2.5 trillion, $2 trillion goes to these big corporations. The Boeing, the Hathaway, and so many other military companies. They literally make crazy amount of money. And It's who are the it's who psychotic. ये कैसे पागलपन है मुझे पता है मुझे याद है जब कोविड and we had the first lockdown and I remember people getting very angry at people who were hoarding all the tissue paper and hoarding loads of food and things like that and hand sanitizer. People were so angry. My brother-in-law said he wishes people who were hoarding those stocks and supplies would die. He was that angry. लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचो, if you just think about how much they psychotically hoard these resources and these wealth for themselves, things that they're never going to be able to spend themselves in their whole freaking lifetime. You think how absolutely pathologically insane and selfish and it just blows your mind how disgustingly कितने जुल्म है ये समाज जो हम रह रहे हैं. It's absolutely crazy. Billions. You can't even imagine. If you started to count it, it would take you years to count to even like 1 billion. It's absolutely insane. Sorry, carry on. yeah, and here is one more point. Lindu support Islam, Muslims support Palestine, save Manipur, save women, and even by the way, in India we have our prime minister doesn't bother to tweet about Manipur crisis, the literal violence happening between the two tribal communities. He never bothers to Mm. talk. He has all the time and to bother about Israel and the other thing. Wow. So It's we just have, it's just like deflecting attention, isn't it? It's just yeah, and yeah. you know, isn't it interesting? The moment Ukraine has almost lost the war,
Israel-Gaza war had to start. Isn't that a very Mm. interesting? Israel, Ukraine officials, they almost agree that the war cannot be continued for long. It almost goes. Biden administration says $100 billion to Ukraine and Israel for the war. What Mm. psychopath to be really? And I Yeah. don't even. And it's fair to say it's not even capitalism. It's fair to say it is militarism, Mm. militaristic. It's not even capitalism, for example. I mean, the idea that laissez-faire and free market is actually, they say socialism is utopia, but free market, tell me, where is the free market? Capitalism. Beautiful. Exactly. Yeah, market Yeah. sanctions. A free market with sanctions on different countries. Yeah, definitely that is free market. Wow. Mm-hmm. And where is fair? I mean, you have some big corporation monopolies. There is no laissez-faire. Yeah. So, Exactly. Uh, yeah, you've probably heard of this thing called the invisible hand of the market. yeah, Basically, the idea that the market corrects itself, and supply and demand of goods, they kind of sort themselves out. Um, and it's insane because obviously, clearly, hmm, the hmm, whole hmm. system and the whole society is absolute chaos. I Um, would say and they're invisible. always wanting governments to bail them out, like in the 2008 when we had the bankers crash, the Well, banks crashing. by the way, Countries had to bail them out. Sorry, carry on. if you're keeping pro-Jewish and pro-Muslim mindset, you will never understand Israel-Palestine conflict. You will always be at the wrong side of history. Mm, However, and what is imperialism, what is capitalism, what is military industrial complex, you understand the mm, Israel conflict very well. That is much exactly. better way to understand this conflict rather than I am a Muslim, so I support Palestine. Hamas is also great. Thank God. Okay, and I am a Jewish, I am a Zionist. I support stand with it. Use your rational, critical thinking. Get out of your own head and actually examine the facts for yourself. As Yeah. like you're an alien, it would be a lot more comprehensive if you do that than thinking from your own tribe. Yeah. And you know what? One of the things I say to people is whenever there is a war going in worldwide, one of my best advice is keep make a list of in Google. Go type the military, private companies, military corporations. You just Mm. type stock values on their. Mm. You can check that track in Google every day. Whenever a war is going on, that will tell you what is the answer. National capitalism, I tell you, is like a it's like a invisible monster which has Mm. tools like nationalism, imperialism, colonialism, fascism, Mm. military, all that. Religion as well. Religion is a tool of capitalism. Anybody who Uh, says who says I am atheist and I am a neoliberal, what you're saying is I'm atheist, but you know what? I want terrorists also to thrive. I want religious extremism to continue because I want to send some money back to the private corporations. Yeah, हाँ that's बिल्कुल धर्म जो है वो is class system. धर्म class system है. That's it. It's exploitation. It's manipulation. It's absolute. It was designed that way. अगर आपको पहले धर्म जो रही थी, like I think some of the earliest ones is Sumerian culture, Sumerian civilization. उसकी पहले पंडित जो थे वो Thakur थे, so they were landowners. And yeah, the priests were landowners, and the people who worshipped were slaves and people who worked the land. You see that in Hinduism carried on, and other religions. Maybe in my thinking, religion is probably one of the um, most powerful tool and the longest lasting tool that like the rich and the powerful have to today. yeah. And without a doubt.
even in secular countries, यहाँ UK में हम secular है, लेकिन फिर भी we have priests and people from the Church of England in our helping to make our laws, because they're in our House of Lords and things, and they have more say over the laws that are passed that affect everybody than the trade unions do, for example, or civil society groups and things like that. It's insane, but it completely warps people's brains. It completely gets rid of people's humanity, and instead of seeing people as humans, they see them with stickers like Hindu, Muslim, Sikh, Dalit, rich, poor. By the way, recently, Defense Minister of Israel said, we are fighting the human animals of Palestine. So basically, they don't see them as humans, they see them as animals. Animals. Zombies to be killed and shot dead in the movies. That's what they see, basically. That's I mean, it can't get anything worse than that, folks. And you know what? You need to look at another thing. Recently, few years back, oil reserves were dug up near the Gaza border. Makes more sense why Israel wants Gaza. You know, what's the Syria? They don't have anything much now. You know what? US has stationed army near oil reserves, and their only job is to put that oil in the truck and send it back to US. That's it. Nothing else. This tells war is not about for democracy or against dictatorship or fighting the jihadists or anything. No. You know what? Wahhabism was promoted by UK. Wahhabism was promoted by US. Yeah. They never fought the jihadists. They never fought the Wahhabism. Okay. You know what? They were fighting? They were fighting the Arab supremacists. You can't even call them as Islamist supremacists of today. They were vastly different. Basically, Saddam Hussein, Bashar al-Assad's father, they come to that category where they talked about pan-Arab, like how we have pan-Asianism, they talked about pan-Arab unity. So religion was somewhat a secondary thing. It was like, yeah, you can have any religion, but we are basically ethnically Arab and Arabs should unite. Basically, that sort of. And this is why you have Arab League, which was founded. Okay. Saudi Arabia was the only exception, which actually said Wahhabism over Arab identity. Saudi Arabia was an exception, just in case. Okay. So, what did America do all along? They started promoting the Mujahideen, they started promoting the Wahhabism, they started promoting all this. Today, Hindutva claims to fight terrorism, yet you want to be a puppet of a country that promoted these things. You are ready to be that. Neoliberalism. You can't, I'm fighting Islam and I support capitalism. That doesn't work. Exactly. You have to along with jihadism, because jihadism needs, it's an ideology on its own doesn't exist anything, it doesn't have any value until you provide the money, you provide the logistics, you provide the weapons. You have that, ideology makes sense. Same thing applies to any other extremist ideology. Give them the money, give them the weapons, give them anything, they can overthrow any government and establish any state. Coming to an extent, okay, largely to mainly through mass support. The Islamists did through Western support, Western money, Western weapons. They use the same AK-47 which the American soldiers use. The question is, how did that AK-47 end up at the hands of the terrorists? And by the way, when the Israel and Hamas war started, Hamas were using drones of Ukraine. What the heck? Ukraine or Gaza? Tell me, what the heck are they doing there? What is the job of Ukraine giving them the drones, which they were supposed to use it on Russians? But we are seeing that Hamas is using that second-hand drones from Ukraine, and they are killing the Israeli soldiers and civilians. Hang on, what is going wrong? You should ask this question here. There is a big problem here. The people what is this war about? When the two sides are using almost the same weapon and same model, what is this war about? Tell me. It's not about protecting Israel.
It's not about protecting, or it's not about a religious jihad. Religious jihad, open the Quran, open the hadiths. Does it tell to use the modern day weapons for jihad? Does it? Oh, No Islamic yeah. scripture I've read so far has jihad through using modern gunpowder weapons. Not even gunpowder was allowed. Your jihad based on sword. Sword is mentioned for jihad. So where is your, where you, instead of AK-47 use your sword? What is, where is your sword? That's what your scriptures say. Hadiths, Quran, call it whatever you want. Yeah. Using Kafir's technology. I mean, yeah, Yeah. I guess it's that's what I've been saying. You cannot neoliberal capitalism and austerity economics by saying that I'm against Islam. I mean, here very strange politics going on. The so-called left and the so-called right. Mm. They center right as the left, far right as the right. What? Mm. The media Mm. gone nuts? Uh, yeah, that was one of the things that I wanted to talk about as well. When I've been looking at the posts about Israel Palestine, the left wing social media is all about how bad Israeli and Western colonialism is, or both Buddy had. It's absolutely horrendous, which it is. You know, there's all sorts of evils and issues with that, but they completely ignore the fact that the Hamas, which represents to an extent Islamic imperialism and colonialism and the history and the project, they completely don't acknowledge that at all. अगर आप Muslim नहीं है और Middle East में रहते हो, unless you are really rich, your life is hell. Religious minorities in the Middle East are treated like absolute rubbish. And in places like Pakistan, absolutely dire. So it's no wonder why if you look at the population of the Jewish community in the world, it's drastically gone down. And of course, there are going to be people in Israel who want some sort of security and homeland and stuff like that. But they're just so busy kissing the ass of like the likes of Hamas and the Muslim apologists and stuff like that. They completely ignore the completely barbaric nature of sort of like Hamas and the Islamists that they represent. And the history. It's really disgusting and really sad. I've seen sort of like, because I sometimes, I do tend to work more on TikTok than on other platforms. When I've shared information about the Yazidi um, minority group in Syria and Iraq, a lot of the left have completely just been like, oh, well, is that genocide still going on? It's just so flippant and they don't give a toss. It's like somebody Yeah. has taken a knife to their brain and given them a lobotomy when it comes to Islam or anything like that. It's absolutely horrendous and it's disgusting. It really is disgusting. Sorry. And here is one more thing for the left to remember. You cannot support Hamas. The more reason you cannot support Hamas is because it's an offshoot of Muslim Brotherhood. Basically, Hamas, uh, हमास trade unions और lefties को बहुत प्यार करती है ना? and and I'm being and sarcastic. and you say you're fighting capitalism, but capitalist President Dwight Eisenhower in 1953 went and attended Muslim Brotherhood conference. Freaking Mm. he supported and endorsed them. And Oh, against whom? exactly. हमारे UK में not Prince Charles anymore, King Charles, he's hosted and supported the Rajakars who were Islamists in Bangladesh, and there's photographs with them,
Yeah, and You know, and then you've got pictures of the royal family, the UK royal family, looking up to like kissing the ass of Saudi royalty. It, yeah. yeah, Sorry, carry on. and against whom they were supporting them against Gamal Abdel Nasser, a secular leader of Egypt, who was probably Exactly. secular leader. Okay, you're supporting that against him, and after a few years, Gamal Abdel Nasser is assassinated. Anwar Sadat takes over through military coup. Okay, Yep. Anwar Sadat tries to resolve Israel-Palestine issue probably around 1981, and guess what? He is assassinated. Because if he resolves it, how is there are they going to benefit, right? And Mm. then comes the US puppet Hosni Mubarak. Hosni Mubarak ruled straight out for another 30 years until he's thrown out in 2011, basically. That's exact story here to keep in mind. Mm. This was an offshoot of Muslim Brotherhood. Keep in mind, Gaza was initially a territory partly controlled by Egypt. Palestinian territory, but controlled by Egypt, okay? Until Mm. 1960s. Okay. Now, 1980s is where they made the split, Hamas. Okay. And guess what? Benjamin Netanyahu, after the assassination of Yitzhak Rabin, who was the prime minister of Israel and who wanted to resolve this conflict, who had Oslo Accords. He signed the Oslo Accords. Go check what is Oslo Accords. Palestinian leader Yasser Arafat and Yitzhak Rabin. And it was actually attended by Bill Clinton, who was the president at the time, US president. He signed that Oslo Accord, and guess what? Far right extremist, just like in India, far right Nathuram Godse killed Gandhi, far right extremist kills Yitzhak Rabin, 4th November 1995. Okay. After his assassination, who comes to power? Benjamin Netanyahu. And he, instead of even going against the Hamas and the Islamic jihadists, he endorses it against whom? Against the Palestine Liberation Organization. He endorses Hamas, he endorses ISIS, he endorses Al Qaeda through Mossad and other Israeli intelligence to sabotage whom? PLO. Wow. And somebody was saying, I asked, whom do you support, right? I asked, Mm. would, whether it is better to support Bashar al Assad or ISIS. Tell me which is the option. He said both are. I agreed that, okay, both are. Which is better? Tell. He actually said yes. But then he had to, oh, maybe I'm wrong. Then he said, no, it's Bashar. I support Bashar al-Assad, not ISIS. He had to correct again. I mean, you have to literally read out the history to know what Bashar al-Assad is basically. Mm. Family dictator, no doubt about it, but he's not an extremist like ISIS who will parade women on the street. He's not going to sell off the women on the market like in Libya, the Al Nusra Front, which does that. He's not going to do that. I mean, anybody who says that Bashar al Assad is terrorist, you must have been brainwashed to an extent by the Zionist propaganda. Folks, I'm sorry. Yeah, they said weapons of mass destruction in Iraq, which was imaginary. As it turns out, you know what happened to Iraq. Again, Mm. as I say, you don't know history of Middle East, then please shut your mouth. It's better to shut your mouth than supporting. Yeah. Do your research, find out for yourself, and don't just look at one source. Don't just look at the mainstream media. Look at what different organisations are saying, from different camps as well. And yeah, um, yeah. So I'm gonna have to go, but it's been really good talking to you, and thank you so much for what you're doing. Your work is really important. And Uh, next live on dowry, I have a live on, I think, child marriage, female infanticide, child labor, and many other things. These are coming. And big YouTube channel, they never ever talk about this. Imagine if they talked about it, it would make world of hmm. difference. They don't want to Oh, make a difference. exactly, Bill. Yeah. So yeah, hopefully,
hopefully, the conversations you're having, they will encourage other people to speak out and things like that. Because I am terrified of speaking online and talking to people. But the work you're doing and the conversations you've been having, I've kind of had to sort of come on and support you a little. But yeah, thank you very much, and I'm sure I'll speak to you again soon. But Sure. yeah, keep on the great work you're doing. Thank you very much. If you talk about independent sources, here is an independent source, Miko Peled. He's and there is another person, Jackson Hinkle, okay, from Twitter. Yeah. His YouTube was banned. YouTube account was Jeez. banned for talking about the Zionist propaganda. Okay, basically he debunked the certain claims. His whole channel was banned, and he was talking about the military-industrial complex and the deep state. He was banned, basically. So you need to understand this. Miko Peled is another guy whom I think is worth listening to because his father was the founding general of Israel. Yeah, his father Oh, was. okay. Miko, his father was, and he lived in Israel for quite some time. Was pro-Israel, but after seeing what actually Israel does in the name of defense, they're doing is capitalism, but yeah, exploitation. So he has written a lot of work and books Yeah, on that. Yeah. brilliant. I'll have a look. I think I don't know where I saw it, but I think one of the children of the Hamas organization has criticized Palestine and Hamas as well and turned away from that too. There's a similar parallel on the other side too. I'll see if I can forward you the Yeah. details. But Sure. yeah, well, Yeah, I think you are referring to the son of the Hamas leader, I guess. I have seen I his think video. so. Yeah. Yeah, I have seen his video in the UN where he actually literally shuts them out. But you need to understand there's two sides of Hamas doesn't represent Palestine. That's the point. The whole Mm, point of it is to tell Hamas doesn't represent the Palestine or its cause. Muhammad Abbas exactly. with Palestine Liberation Organization is what represents the Palestinians of Gaza and the West Bank. That's the solution, right? Hamas is not Mm, the solution. Hamas is playing into the hands of Israel. That's what they're doing, directly or indirectly. Yeah, exactly. yeah. 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 So I completely agree. Without a doubt. But yeah, I will let you take on other callers, and I will say bye for now. And yeah, keep up the great work. Thank you very much. Yeah, sure, sure. Come All right. anytime. Pleasure. Thank you. Yeah. Take care. Bye. Bye. Happy Sunday. Happy Sunday. Yeah. So he says Punjab Dia Moja. Hi everyone. Jai Shri Ravana. Okay. And ping, ping. Okay. Who is the guest? Actually, she is an ex-Muslim. That's what I know. Okay. So random person. Yeah. Okay. Uh, I think I made myself clear. Anybody else wants to join the live and talk on this issue, they're welcome. Else, I will end the live. All the references are here. All the references I have given are in the description. Check out the references and find out for yourself what is actually happening, basically. Okay. So, what is the solution to Israel Palestine conflict? Israelis vacate the settlements in the West Bank. Uh, BRICS destroy the Hamas, okay? And Palestine is recognized as a separate state with Ramallah as capital. Israel is made as a separate state with Tel Aviv as capital, okay? And Palestine has its own sovereign state and army. Israel has its own sovereign state and army. And Jerusalem will be the religious center like Mecca for, yeah, I mean, gathering Jews, Christians, Muslims, yeah, a separate territory, basically. Okay, that would be the real solution for Israel-Palestine conflict. Okay, so with this, I end my live, and hopefully, people have enjoyed watching my live.
Like, share, comment, subscribe, hit the bell icon, and let's spread the word. He says, Jay, okay, I'm ex-Muslim atheist. Yes, I'm random person. Yeah, that's what I said to her. Yeah, it is stand-up person. Yeah. Jai Shri Suleiman, the killer of deer. Hello, everyone. Jai Shri Ram. Yeah, I mean, it's great to hear today's lots of comments, lots of engagement. Next week, I have coming live on this week, Friday and the Sunday. Do watch out. Yeah. Okay, let me end the live. Bye.